So I think we can start with the basics. I think let's if you can tell us about the journey. How did you get into the aesthetics side of things, and the education, the background? Maybe I think we can Right. talk. So surprisingly, when I finished my medical med school, the day that I graduated, I met an accident and Achha. I ran into a truck and I had about 50 stitches on my face. Oh, So my whole face was destroyed. I went to every doctor in Pakistan and they all handed me a huge list of treatments, or they told me this would cannot be fixed. So I thought to myself, if this cannot be fixed, then I'll fix it myself. So I started studying aesthetic medicine, and फिर पढ़ते पढ़ते patients started pouring in, अपने आप को treat करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता patients आने लगे, फिर उनको treat करना शुरू कर दिया. I started doing my master's in aesthetic surgery from mhm. University College London, got my fellowship from Esenhurt University and Brussels Capital University Istanbul, and here we are. Amazing journey. I never knew about that, so I think it's an amazing lens to see life. I think it's typically a subjective lens. यानी हर हम्म का हर बंदे का देखने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, तो ब्यूटी के बिल्कुल स्टैंडर्ड्स ऐसे डिफरेंट ही है. है. तो where do you draw the line? Is it basically some kind of a parameters जो हम tweak कर सकते हैं किसी की ब्यूटी को enhance करने के लिए, या are there set standards? So, aesthetic medicine is anything, is a branch of medicine that deals with improving your physical appearance, right? It can range from contouring your jaw to contouring your body, tightening your face to slimming down your nose, changing your features, anything, right? So, there's actually no limit to it. You can keep on going. And there's so many new minimally invasive treatments that we are now doing in Pakistan as well Hmm. that actually revolutionized the field because अब जैसी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं वो पहले बिल्कुल नहीं होते थे. पहले हम लोग छोटे से नाक पतला कराना है तो सर्जरी करानी पड़ती थी. अब वी हैव जस्ट अ सिंपल इंजेक्शन जो आपको 10 मिनट में वही रिजल्ट दे देता है जो सर्जिकल ट्रीटमेंट का रिजल्ट है. तो इट्स अमेजिंग. Sounds interesting. इसी से related सवाल है. Instagrammable lives के ऊपर typically एक criticism आता है कि we don't need to project ourselves. Obviously, we are living through the people's lens in that particular case. Uh, so एक personal well-being का concept है जहाँ पे you can obviously try out things just to feel good about yourself. So where do you डेफिनेटली. draw the line in that particular case? Uh, So Instagrammable whenever lives I versus. see, yeah, so whenever I see a Gen Z or a millennial patient, the first thing I tell them is that focus on realistic expectations, right? क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी दफा एक पेशेंट यंग लड़की मेरे क्लिनिक में आई है मेगन फॉक्स की पिक्चर लेके कि ये ऐसे ही होंठ कर दें या ऐसे ही नाक कर दें. तो it's not a bad thing to actually idolize somebody, and maybe I can even get you 90-95% close to it, but that shouldn't be your expectation, right? Walking into a doctor's clinic, आपको आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि जो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट फीचर्स हैं आप उसको एनहांस कराना चाहते हैं, ना कि आप किसी और को की फलानी फलानी बंदी की कॉपी बनना चाहते हैं, राइट? Hmm. So that would be my advice to people as well, that just enhance your own features, go for that rather than just blindly copying some model or anything like that. Yeah. Absolutely. I Hmm. think every person is unique, so I think great True that. advice. Yeah. सो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे Hmm. एक वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है कि गोरा होना है और उसके कुछ Oh, कल्चरल हाँ, एस्पेक्ट्स हर हैं. किसी को चिट्टा होना है. Yes, of course. मेरे 90% पेशेंट्स को बस गोरा होना है और कोई उनका एम नहीं है क्लिनिक आने का. बट ऑफ कोर्स हमारा कल्चर इस तरह का है दैट बेसिकली आवर कल्चर इज सेटिंग द ब्यूटी आइडियल्स, राइट? सो द डिजायरेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीइंग थिन एंड बीइंग चिट्टा. ठीक है. सो what of course it drastically affects the treatments that we are providing as well, because right now my clinic is providing approximately 20 treatments just for whitening, different treatments, अच्छा. because demand ही है. हम्म. डिमांड ही है. बट मेरे लिहाज से ये सच नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन द मोस्ट ब्यूटिफुल स्किन ऑन अ रियली टैंड वुमन, हम्म. एंड आई हैव सीन अ गर्ल लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल ऑल्दो शी वाज चबी. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, तो उस हिसाब से फिर ऑफ कोर्स काम करना पड़ता है. अच्छा, इसमें वुमेन वर्सेस मेन का भी तो डिफरेंस होगा, क्योंकि टिपिकली ये जो ब्यूटी ना ना, स्टैंडर्ड्स हैं. सबको चट्टा होना है. एवरीबडी वांट्स टू बी अच्छा. फेयर, मेन विमेन एवरीबडी वांट्स टू बी फेयर, कोई फर्क नहीं है. हाँ, that is there. इंटरेस्टिंग. But of course men have this thing that they लेसर want to एक्सपेक्टेशंस आई most, yeah, lesser expectations. लेकिन अब men are more focused towards having
the perfect jaw lines Yeah. and the perfect beard, और ये वाली जो उनकी obsession है, अब of course लड़कों में भी awareness आती जा रही है, तो लड़के भी start उन्होंने कर दिया ये treatments लेना, जबकि पहले मेरे पास इतने लड़के नहीं आते थे. So that's interesting. तो उसमें आई थिंक वो हेयर पीआरपी ज्यादा होंगे मेन नहीं वर्सेस. अब तो लड़के सब कुछ करा रहे हैं. I recently did a buccal fat surgery for a guy who wanted अच्छा. cheekbones, and परसों मैंने एक लड़के की jaw define की है and he wanted जो like a आई कैन neck lift अंडरस्टैंड. and a या. jaw. हाँ, so वो तो of course अब trend start हो गया. सही है. तो टिपिकल अगर हम स्किन केयर की बात करें, यहाँ पे मिसकंसेप्शंस भी बहुत ज्यादा हैं. तो टिपिकल मिसकंसेप्शंस, व्हाट आर द टिपिकल मिसकंसेप्शंस दैट यू हैव सीन, जो कि The biggest मिस misconception. Yeah. मिसकंसीव नोशंस होते हैं, जैसे लोगों के कहीं से पढ़ लिया, सोशल मीडिया से पढ़ लिया. So the biggest misconception would be that people think that if they buy everything on TikTok, every viral product on TikTok, their skin would become like Korean glass skin. That's not going to happen. ठीक है. They आपको are ये victim of a चीज marketing campaign. Exactly. It's not even marketing. It's just that something that suits falana person might not suit you, right? Yeah. तो आप अपनी listen to what your skin is saying. आप देखें कि आपकी स्किन को किस चीज की जरूरत है, ना कि टिकटॉक पे कोरिया में उस लड़की ने क्या लगाया था तो वो ठीक हो गई, राइट? सो आज आप जाएं, शीशे के सामने जाके खड़े हुए, अपने आप को देखें एंड सी व्हाट इज योर प्रॉब्लम एरिया. Do you have hyperpigmentation? If you have hyperpigmentation, then go for something like depigmenting agent, allantoin, yeah, alpha-arbutin, something like that. अगर डलनेस आपका मसला है, then go for rice bran और glutathione जैसे ingredients अपने serums के अंदर. अगर आपको white heads हैं, black heads हैं, incorporate AHA, BHAs in your routine. अपने skin के हिसाब से अपनी treatments और अपने serums को buy करें, rather than just blindly following some supermodel or somebody जिसने video post कर दिया है. तो you don't need to follow that. Right. Amazing. So what are the guiding principles when it comes to your approach towards the aesthetics? Are there any kind of models that you follow, for example, from the the theory lens? Okay, so the first principle for aesthetics is collaborative work, right? So if you have a patient with you, you should know that they are very anxious. You should always include them in your procedure. If I'm doing a filler, what I do is that I keep asking the patient, are you okay? Like, do you like this? Do you like where this is going? Is this the look you wanted? आप उनसे जितनी बात करेंगे, उतना वो comfortable होते जाएंगे, and वो आपको explain कर सकेंगे कि वो क्या चाहते हैं. Right. The second thing is patient-doctor relationship. If the patient does not trust you, फिर आप कुछ नहीं कर सकते. फिर आप उसको ना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ना आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं है कि आप दे सकते हैं. Anxieties are exacerbated, so हाँ, डेफिनेटली. ओके, और जब आप देखिए अपने फेस पे आप कुछ कराने जाएं, आप अगर अपने फेस पे कराने चले जाएं, तो आपको पसीना आने लग जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे कि मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक होगा नहीं होगा. सो दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ एस्थेटिक्स, दैट यू नीड टू comfort your patient first and include them. सही बात I है. keep getting call. हाँ जी. Is it disconnecting? नहीं, there's a call coming in between, I think. Okay. बार-बार. हाँ So जी, I think we can pause if you want. No, it's fine. Okay. So इसी से related हाँ जी. question है कि individuality versus you can say कि beauty standards जो beauty ideals हैं. I think it might have been asked earlier as well. But ये जो principle से extension में अगर इसको हम reply करें, so how do you ensure कि clients' unique needs are basically being preserved and you're meeting the needs? So Basically, I like enhancing anybody's natural features. I do not want to make you into something else which you are not. बट एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक एस्थेटिक डॉक्टर जो रहता है ना, वो तकरीबन तकरीबन एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है? सो ही और शी इज गोइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग ऑन योर फेस, ठीक है? एंड आपके फेस को वो ट्रांसफॉर्म करेगा. मगर अगर आप उसके जाते ही हाथ बांध देंगे और उससे कहेंगे कि ये तस्वीर है, ऐसा ही बना दें, ठीक है, तो आपने उस आर्टिस्ट के हाथ बांध दिए हैं. नाउ दे कैन नॉट गिव यू व्हाट योर फीचर्स नीड. दे कैन नॉट गिव यू जो एनहांसमेंट आपको सूट करेगी, बल्कि दे आर जस्ट लिमिटेड टू दिस पिक्चर जो आपने दिखा दी है, एंड दैट मे नॉट टर्न आउट दैट ग्रेट. ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक मतलब थोड़ा सा मेरे ख्याल से ट्रस्ट का इशू, ट्रस्ट डेफिसिट इधर आ सकता है. So how do you ensure कि कुछ sketch हो सकता है, for example in terms of recommendation, how do you ensure that they are on the same page? Because obviously एक start procedure हो रहा है, इतना बड़ा procedure है, like you're saying. तो उससे पहले कोई sketching है, या where do you show it? Is it basically the 3D modeling on a PC
computer or something or a So software? now 3D modeling is, yes, it's there. We are Mhm. doing 3D modeling, but kabhi because of the volume of the patients that I have, I am not able to do the 3D modeling because that requires a lot of time. I do it for the people who want a complete facelift or something like that. लेकिन छोटे मोटे नाक पतला कराना है, jaw contour कराना है, उनके लिए I do not do 3D modeling. But what we do is that we sit down with the patient and we talk to them that what is their requirement, what is the look they're striving for, and फिर हम उनको एक पैरामीटर देते हैं कि इस परसेंटेज में इतना परसेंटेज का चेंज आएगा आप पे. And if they want this 3D modeling, then of course it's available at the clinic. आप 3D modeling करके we can show the patient के results round about estimated कैसे आएंगे. Of course exact तो नहीं पता चल जाता, लेकिन 80-90% पता चल जाता है कि किस किस्म की image आएगी नहीं, बिल्कुल. results में. I think वही जरा जरूरी है कि just to inspire Idea हो जाए. confidence. Just to inspire confidence. Exact. So what are the biggest challenges? One of the challenges that I can potentially see कि किसी का बिल्कुल ही खराब हो गया केस और उसने फिर केस कर दिया आपके ऊपर. नहीं, कभी अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ. ऐसा हो भी ना अल्लाह करे. लेकिन ये है कि मेरा तो सबसे बड़ा चैलेंज इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. हर जो क्लिनिक के अंदर आता है उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि शाम को मैं किम कार्दाशियन बन के बाहर निकलूं. ठीक है, हालांकि everybody knows this is not a possibility, right? And I do give very very good results, but still some people have very very high expectations. Yeah. So that I do not treat patients with high expectations. Now what I started doing is that I tell them that see, your expectations are very high and they're unrealistic. So maybe you can get treated somewhere else, or you can just read up on this and see कि आप थोड़ी अपनी expectations को जमीन पे लाएं. तो realistic रखें, तो of course realistic results are possible. So Absolutely. that is something that I face So every day. ये स्टेम कहाँ से होता है? Typically inferior complex है या क्या, जहाँ से expectation drive हो रही है? This Is it is basically? online. Mhm. Online. See, देखो Yeah. आप I know so many clinics and so many not local clinics, but a lot of clinics who are editing patient pictures before and after results, right? So आपने अब उस पेज पे देखा कि वो before and after तो ऐसे पहले काली थी फिर बिल्कुल गोरी हो गई, तो वो तो एडिटेड था, लेकिन आपको तो नहीं पता, आप तो इम्प्रेस हो गए उस चीज से, एंड अब आपको भी यही चाहिए और आपको ये फौरन चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑल ऑनलाइन, राइट? वी सी इट एवरी डे, वी स्क्रोलिंग पूरी रात बैठ के, वी स्क्रोलिंग ऑन अच्छा, फेसबुक, सो दिस इज व्हाट वी सी. ये तो बड़ा पैराडॉक्स है कि आप एक चीज जो एस्थेटिक्स को सही कर रहे हैं उसके ऊपर भी यू आर putting the Photoshop or something just to enhance that. Yes, which is very unethical according to me. Because like you cannot edit patient pictures, right? आपने यही तो पेशेंट को असलियत ही तो दिखानी कि this is before and this is after. ठीक है, अगर आप इसको एडिट कर देते हैं तो फिर तो सारा पॉइंट खत्म. बट पीपल आर डूइंग इट, वी कैन नॉट स्टॉप एवरीबडी. सो क्या कर सकते हैं हम? अपने पेशेंट को बस काउंसिल ही कर सकते हैं. सही बात है. One piece of advice that you would like to give to anybody who is trying to consider procedures? Consider procedures. Yes, I would like to give this advice actually. So what I would like to tell you is that do not just rely on the research that you've done on YouTube or falana site. ठीक है, go to a certified professional, ask them what they think is good for you. Even if आपने नहीं कराना कोई मसला नहीं है, but still ask for a professional's opinion rather than just deciding for yourself and research खुद ही करके, खुद ही एक अपने दिमाग में preconceived notion बना के कि मैं यही कराऊंगी. So today a lot of patients come to me and they have already decided what they want, right? So there's no changing their mind. They have decided कि उनको जरूरत है नहीं है, उन्होंने यही फलाना ट्रीटमेंट कराना है. This is not how you should proceed towards treatment, right? तो आपको प्रोफेशनल से पूछना चाहिए. You should see what might suit you and what might not suit you and then proceed towards aesthetic procedures. हाँ, ये सबसे ज्यादा important है. Amazing. So looking back in retrospection, what are the most rewarding aspects of this particular career? This career, the most rewarding thing would be that when you have done a patient and when they go and see in the mirror and they smile and then they look at you and it's kind of like a thank you, but they're just smiling at you and that's it. That makes me happy, makes my day. Absolutely. So yeah. नहीं, वो तो हाँ. बिल्कुल एक बड़ी जबरदस्त फीलिंग है क्योंकि you have enhanced aesthetics और वो fruition में नजर आ रहा है. Definitely. So I just had a patient who came to my office and she thought she was very overweight. I tried to tell her that these are just societal norms. Your beauty is your beauty, does not matter आपका क्या weight है. But here she said she couldn't get married, so she was practically suicidal and she cried in my office for 30 minutes. Right. And then we gave her slimming drips. She lost about 15-16 kgs and अब उनका मुझे परसों उनकी शादी का कार्ड आया कि जी मेरी शादी हो रही है, थैंक यू सो मच है वो. तो सोसाइटल नॉर्म हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन चले अगर किसी के लिए थोड़ी सी जिंदगी बेहतर हो रही है या किसी को अच्छा फील हो रहा है तो व्हाई नॉट. नहीं, अमेजिंग. ये तो आप जन्नत में जाएंगे आप, मुझे लग रहा है.
ये तो amazing ये तो वाकई I can foresee that happening. So yeah, Yeah. because obviously वो it's Thank you. not it's अल्लाह not about करे. I think it's not about the person. वही बात है कि वो societal standards हैं. So हाँ, yeah, definitely. societal construct. हाँ, हाँ, true that. So in terms of the trends, what are the trends, typical trends that you're seeing, or उसको catch up किस तरह करती हैं? Because I think the other world is advancing at a very rapid pace. Hmm. So how do you basically catch up with that? So I am always attending conferences. If there's a conference anywhere in the world, I'm there. I love traveling. I love going abroad. ठीक है. So I just recently came back from Dubai Dharma. उससे पहले I was in Istanbul doing a fellowship. So I love doing that. And secondly, I was working in Sharjah. So I am in constant contact with my colleagues in Sharjah and UK. तो वो बातें शातें चलती रहती हैं. कोई अगर treatments चल रहे हैं तो हम knowledge exchange करते रहते हैं. So that's how it works. And yeah. Right. So इसमें typically, where did you see the most advancement? I've heard about Turkey, but हाँ, Turkey तो it's the hub of aesthetics. yeah, The most advancements I've seen in Korea. उन्होंने okay. ऐसी ऐसी चीज इजाद कर ली है कि आप अभी उस चीज का तस्वीर भी नहीं कर सकते. उन्होंने कर ली इजाद. Is it basically from a Right? tools standpoint, or is it basically in terms of the Product standpoint. procedures? Product Okay. standpoint. Right? So they have created products which will cause instant whitening, instant lifting, instant changing of facial features. ऐसा ऐसा खूबसूरत product है. And secondly, the another thing that I'm really excited about is that minimally invasive procedures अब बहुत एडवांस्ड हो गए हैं. पहले हर चीज के लिए सर्जरी करानी पड़ती थी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा. अब you don't need to go through that extended recovery time, and you don't need to go through that pain and general anesthesia going under the knife and all that, and you can just go. जिसमें पहले लोग पतला होने के लिए सबसे एक ही ऑप्शन थी, liposuction करा लो. Right? And it had a very long recovery period. Now people are getting slimming drips, which is like very easy, comparatively lesser side effects, no problem, and you get the results, right? तो बड़ी बेहतर अच्छी बात है. Amazing, absolutely. So yeah, I think we are closer to the end. I think it's been like 30 minutes. So what's the final advice that you would like to give to the listeners, and how do they pursue this particular career? How they can pursue this career? You should please get a proper degree in this before you start doing this. Secondly, work under the supervision of a qualified doctor before you start your own thing. And this is for the doctors. For other people, I think you all are beautiful. You all look incredible. What you need is not to copy anybody. Just enhance your own features if you want to. If that makes you feel more confident, perfect. कराएं, जरूर कराएं. Maintain करना हर किसी का हक है. लेकिन obsess ना हो इस चीज से. अगर कोई और ज्यादा प्यारा लग रहा है, उसने बहुत फिल्टर लगाए हैं, टेंशन ना लें उस चीज की. रिलैक्स करें, आप बहुत खूबसूरत हैं. Amazing, amazing. Yeah, I think great advice. So Hmm. it has been a overall a good podcast. I think I get to learn a lot Hello. from you. So मुझसे. नहीं मेरा ख्याल है you did नहीं, मैं great. आपसे सीखूंगी. I think you did great. I really liked your questions.